अब आवाज आ रही है? हर्षित, मेरी आवाज आ रही है? ये सर अभी आ रही है। हेलो। ये सर अभी आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज अभी तुम्हारी। हेलो। 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 मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, आपकी आवाज नहीं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन शायद नहीं, अभी तो नहीं आ रही, दिखा तो रहा, लेकिन आ नहीं रही। अभी आ रही है अभी आ आवाज। रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। नो, इट्स फाइन। मेरी आ रही है ना? हाँ। वैसे तुमने वो कर लिया ना? और गेट रूम में देख लेना कौन कौन है, उनको एंट्री दे देना। ओके ठीक सर। है। और वो जो तुम्हारा स्पीकर्स के स्लाइड्स है। ये सर। बट सर ड्यूरिंग तनिष्का, प्रेजेंटेशन आई थिंक वो एडमिट करना नहीं हो पाएगा उसमें। किसमें? सर जिस टाइम प्रेजेंटेशन लगी होगी उस टाइम पे शायद ये एडमिट वो नहीं कर काम पाएंगे। बोलेगी ना, जब बोलेगी कि जब तक तनिष्का बोलेगी तो ये सर। कुछ समय डाल सकते हो, उस पर घटा दूंगा। ओके सर। वैसे मेरे पे भी आ रहा है तो मैं कर लूंगा बाय द मैंने मैंने टाइम तुम मैंने कर स्लाइड दिया। दिखा रहे होगे तो। मैंने कर दिया और हम्म? एजेंडा देख अच्छा, ये भी देख लेना कि जो गेस्ट हैं उनको होस्ट बना देना, को होस्ट, तभी वो बोल पाएंगे। ठीक है। लिस्ट है तुम्हारे पास ना? जी सर। तो उनको भी को होस्ट बना देना। ओके सर। तो क्यों उस पे नहीं खोल पा रहे हैं क्या, पिक्चर में? वर्ड में खोल रहे हो शायद, पावर ये सर पॉइंट में। इसको पावर पॉइंट में ही डाला था सो दैट कंटिन्यूअस हम लोग चला सके इसको। अच्छा ठीक है। नहीं तो यस। शो कर सकते हो ना नीचे से। यस सर। शो में डाल सकते हो नीचे से। देखते रहना कौन कौन आ रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। सर आई थिंक को होस्ट के पास ऑप्शन नहीं होता है किसी को होस्ट बनाने का। उनको होस्ट बना दे। कि मैं जब बोलूंगा तो मैं इसको फिर कर नहीं पाऊंगा ना। यस सर। सर आई थिंक सत्यांशु सर तब तक देख लेंगे क्योंकि इसमें तो प्रेजेंटेशन लगी रहेगी। मुझे उनको को होस्ट बनाना पड़ेगा फिर। सर वो को होस्ट तो है उनको मेन होस्ट आई थिंक बनाना पड़ेगा। सत्यांशु जी। हेलो। हाँ, इशू क्या है इसमें अभी? नहीं नहीं, अभी जैसे कि वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग हैं, तो हाँ, उसको मैं देखना। उनको एडमिट कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं ना? हो रहा है हाँ ना? हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। विल स्टार्ट एट 6 ना। अरे लोग आते रहेंगे अपना। तनिष्का, तुम्हारी आवाज आ रही है क्या, तनिष्का? हाँ। तनिष्का, चेक कर लो एक बार। हेलो। तनिष्का, देख लो तुम्हारा माइक काम कर रहा है। Hello, is it audible? या या इट्स Okay, it's okay. Thank you. इट्स
नमस्ते सर। नमस्ते मत करिए, बाद में करिए नमस्ते। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ना। आर गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग एट 6 o'clock। ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, esteemed guests, speakers, our donors and participants. I'm delighted to welcome you all in this webinar under our program October 2023, a special initiative organized in recognition of the International Day of Girl Child. This day is dedicated to addressing the unique challenges girls face worldwide and promoting their empowerment. Throughout the month, we have a series of activities lined up on the October program. These includes local discussion among club members, local summit with parents and other stakeholders, visit to Happiness Lab at Lucknow University, a regional summit and awareness campaign on girls' rights at metro station in collaboration with the Uttar Pradesh Metro Railway Corporation. As we dedicate this month to girls, we aim to ensure that our message does not get drowned in the excitement of the World Cup. To that end, we have launched our campaign, Umpire for Equality, in association with the Big FM 94.3 FM. In a world where gender equality is still a goal rather than a reality, it's vital to find creative ways to advocate for girls' rights. Our campaign, Umpire for Equality, is one of such initiative by our organization, Shohratgarh Environmental Society. We use the universally popular sport of the cricket as a medium to promote girls' rights, especially in the Indian context. Just as umpires in the cricket use a specific signal to communicate their decision, each one vital for the smooth running of the game. We believe that each one of us can act as an umpire in the fight for equality. Our actions and decision can signal our stance against gender inequality. Throughout October month, we aim to reach not just to our beneficiaries, but also the wider population of Lucknow city and other cities. As a continuation of our ongoing activities, we are hosting this webinar. The theme of the today's webinar is Invest in Girls' Rights, Our Leadership and Well-being, which serves as a crucial component of our initiative. Our objective is to underscore the importance of the investing in the girls' rights, inspire leadership among girls, and promote their well-being. We are privileged to have a distinguished panel of experts who will share their knowledge, personal experience, and strategies that can empower girls and contribute to their overall development. Today, our webinar feature an expert in education, people who specialize in sexual and reproductive health, gender-based violence, happiness and well-being. Additionally, we have a captivating storyteller who will set the tone of this session. We look forward for enlightening discussion that will contribute to our shared goals of empowering girls worldwide. So, hope you will enjoy this webinar. Tanishka, over to you. Tanishka, thank you.
Thank you, Sandeep sir. Hello, everyone. I, Tanishka, and SES team welcome you all to our webinar on Invest in Girls' Leadership and Wellbeing. This webinar is a platform for us to come together, share insight, and discuss strategies to empower the next generation of female leaders and ensure their holistic growth. Today in webinar, we have prominent speakers like Swiksha Prasad, Medha Kohli, Ilyana Katz, Dr. Pushpanjali Singh, and Kriti Prakash, who will shed lights on the various aspects of girl leadership and well-being. Each speakers will have 10 minutes to speak on their respective topics, and after that, for 15 minutes, our club girl will provide some insight for experiencing in finding out girls' issues in their community, an initiative to educate the issue, followed by and question and answer sessions. So let's start and welcome our first speaker, Ms. Raksha Prasad. She is a life coach for kids, a writer, a storyteller who has worked with over 4,000 children. So we invite Ms. Swiksha Prasad for storytelling and settling the tone. Everyone, please welcome Ms. Swiksha Prasad. Over to you, Ms. Swiksha. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. I hope I am audible and visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, Richa, yes. Yeah. तो आज जो ये इतना खूबसूरत सा एक इनिशिएटिव SES हमेशा ऐसा काम कर रहा है, करता आ रहा है, और बहुत खुशी है मुझे कि मैं इस बात का हिस्सा बन पा रही हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, वो भी हिंदी में। तो कुछ ऐसा है कि पापा की परी हूं मैं, नाजों से पली हूं मैं। आज के समय में ये बात शायद हर लड़की ऐसा कह सकती है, पर पता नहीं क्यों वक्त के हवा के झोंके के साथ इस पापा की परी में ना एक आ और ई की संधि जोड़ दी जाती है, और ये पापा की परी देखते ही देखते पराई हो जाती है। उस लाड़ दुलार मनोहार से पली पापा की परी पराई होते ही तमाम जिम्मेदारियों की बोझ से दब जाती है, लेकिन फिर उसके जीवन में उसी की ही रूप में, उसी की ही देन एक नन्ही परी फिर आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं आज उस एक ऐसी परी जो पराई हुई और उसने खुद एक परी को पाया, उसकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है मेरी माँ की। मेरी माँ जब वो लगभग 7-8 साल की रही होंगी, और वो रहा करती थी लखीमपुर के पास एक छोटे से कस्बे में। बात है लगभग 1952 और 55 के आसपास की। और ये कहानी अब मैं अपनी छोटी बचपन वाली माँ यानी किरण के तौर पर सुना रही हूँ। तो ऐसा है कि मैं रहा करती थी लखीमपुर में, और वहां उस जमाने में बहुत छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे। स्कूल जाने आने के लिए काफी दूर हमें जाना पड़ता था, और आसपास के बहुत कम ऐसे घर थे जहां पर लड़कियों को पढ़ने जाने के लिए यूं पैदल लड़कों के साथ भेज दिया जाता था। पिताजी बैंक में काम करते थे, तो अक्सर कस्बे से दूर कहीं ना कहीं उनकी पोस्टिंग होती थी। तो मैं, मेरा भाई बउआ और मेरी बड़ी बहन यानी कि बिब्बो, हम तीनों अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अब अपनी दादी की क्या बात करूं, मेरी दादी बिल्कुल वो अप्सरा सी थी लगभग 60-65 साल की। झुर्रियां आ चुकी थी, लेकिन आंखें तब भी उतनी ही बड़ी थी और खूबसूरत थी, और साथ ही हाथों में हमेशा वो सोने की चूड़ियां, उसके साथ में वो मीने की लाल हरी चूड़ियां पहना करती थी, गले में मटर माला, और उनका बड़ा रौब था पूरे कस्बे में। क्यों ना हो, क्योंकि बड़े ही धनाढ्य परिवार का हिस्सा रह चुकी थी, और उसी घर में आसपास के सभी लोगों को उनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते थे। दादी सबसे अलग थी, चाहे वो खाना बनाना हो, पूजा पाठ की बातें हो,
घर वालों की देखभाल हो, पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी दादी ने बहुत अच्छे से संभाल रखी थी और मैं दादी की फेवरेट थी। कुछ भी अच्छा बनता दादी मेरे लिए पहले ही छुपा कर रख लेती। एक्स्ट्रा लाड़, एक्स्ट्रा दुलार के साथ साथ एक्स्ट्रा मिठाई, एक्स्ट्रा भोग, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अचार, मुझे हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता था। और मुझे पढ़ने के लिए दादी हमेशा बहुत ज्यादा एनकरेज करती थी। इस बात के लिए मुझे ऐसी कोई खास फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो बहुत सारी बातें जो मेरी दादी ने मुझे सिखाई आज तक मेरे जीवन का हिस्सा है। तो बात कुछ ऐसी हुई कि उन्हीं दिनों एक कर्मभूमि करके एक साप्ताहिक मैगजीन आया करती थी, वीकली इशू ऑफ कर्मभूमि। और हमारा कस्बा क्योंकि इतना दूर था और वहां ठीक से सड़क भी नहीं बनी थी, तो कोई भी मैगजीन या अखबार एक दिन बाद ही वहां पहुंचता था। और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो मैं बड़ी जोर जोर से उस कर्मभूमि में से अच्छी अच्छी कहानियां जोर जोर से बारात में बैठकर पढ़ा करती थी। और अक्सर दादी जो है उन कहानियों को सुनते हुए बड़े मजे लेती थी। एक बार की बात है, उसमें एक खास कहानी निकली। एक कृष्टक्का नाम की एक महिला थी। उस महिला ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी करके बड़ी ही मुश्किल से तिरुपति में दर्शन करने का फैसला किया। पाई पाई जोड़ी, कई महीने सालों लगा करके उसने जब अपने पैसे जोड़े और जब वो अकेली तिरुपति की यात्रा पे निकली, रास्ते में उसे एक गरीब सी अनाथ बच्ची मिली। उस औरत ने सोचा, कृष्टक्का ने सोचा कि मैं तीरथ जाके क्या करूंगी, क्यों ना मैं इस गरीब लड़की की मदद कर दूं। और कृष्टक्का ने अपनी सारी जमा पूंजी उस लड़की के लालन पालन पोषण में लगा दी। पता नहीं दादी को उस दिन क्या हुआ, ऐसी कहानी सुनकर उनका तो जैसे बिल्कुल उनके अंदर की सारी संवेदना, सारी दया, सारी ममता सब उमड़ आई। और उस दिन के बाद से उस कहानी की लेखिका की जो भी कहानी आती, हर हफ्ते वो दादी मुझसे सुनती और सुनने के साथ साथ न जाने कैसे उनको वो पूरी कहानी जुबानी याद हो जाती। शाम के समय मंदिर के बाहर जो बरामदा था, वहां बैठकर आस पड़ोस की सारी औरतों को वो कहानी हूबहू सुनाया करती। पर कुछ दिनों के बाद वो हमारा एक रेगुलर फीचर बन चुका था। मैं दादी को वो कहानी अक्सर सुनाया करती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे लिए मेरी माँ की तरफ से हमें एक शादी का न्योता आया। और उन दिनों शादियां को ये डेस्टिनेशन वेडिंग और 3-4 दिन के बैक टू बैक फंक्शंस नहीं होते थे ना। आप किसी गांव में जाते थे तो 10-15 दिन लगकर खूब जश्न होता था, खूब मजाक, खूब मस्ती, खूब मजाक, खाना पीना और न जाने क्या क्या हुआ करता। तो मैं भी बच्ची ही थी, अपने भाई बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ मैं भी दूसरे गांव चली गई, क्योंकि पिताजी हमें वहीं ज्वाइन करने वाले थे। अब 10-15 दिन के बाद जब हम वापस लौटे, दादी ने हमारा वैसे ही स्वागत किया, वैसे ही सत्कार किया। और मैं भी अपनी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, दोस्तों में वैसे ही व्यस्त हो गई। पर पता नहीं क्यों दादी के मन में ना ऐसा लगा कि कुछ खटक रहा था। दादी कुछ बोली नहीं और मैं हर रोज रात को छत पर दादी के गोदी में जाकर अपना सर रख करके सोया करती थी। और दादी बड़े ही प्यार से मेरे बालों को संवारती थी और कुछ कुछ बोलती थी और मैं सो जाया करती थी। उस दिन रात में शायद पूरा चांद निकला था, तारे टिमटिमा रहे थे और एक अजब सी रोशनी थी। दादी ने धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेरा और बोली, मेरी बिट्टा किरण, तू जब शादी में गई थी ना, मैंने तुझे बड़ा याद किया। मैंने भी पलट के कह दिया, हाँ दादी, मैंने भी आपको याद किया। अरे हट, तुझे बड़ा मेरी याद आई, वहां जो तू इतना मजा कर रही थी। वैसे सच तो यही है कि शादी के घर में मजा बहुत आता है और मैं बहुत मजे कर ही रही थी। फिर दादी अपना सर मुंडेर की तरफ रखकर आंख बंद कर कर आसमान की तरफ अपना सर करके बैठी थी और पता नहीं कौन सी धुन में एक उदास सी टोन में बोलने लगी कि 8 साल की थी जब मेरी अम्मा गुजर गई। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आई, प्यार करती थी पर घर के काम सिखाए, सबके साथ व्यवहार सिखाया, पकवान बनाना सिखाया, घर गृहस्थी का सब कुछ सिखाया। घर में खूब धन दौलत थी और फिर मेरी शादी हो गई। शादी हुई, फिर मैंने इस घर को अपना बनाया और यहाँ पर वही सबकी देखभाल, सबके लिए खाना पीना, हर चीज का इंतजाम करना, सब रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बस यही मेरे जीवन का फल बन गया। पर अब सोचती हूँ
इतना धन दौलत किस काम का जब मेरे पास वो नहीं जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। रात के 1 बजे दादी को मेरी न जाने कौन सी गाथा सुनानी सूझ रही थी। ये मेरी समझ से बाहर था। मेरी उम्र कुछ लगभग 7-8 साल की तो थी। मैंने उठकर दादी के चेहरे की तरफ देखा तो उनकी कनखियों में ना छोटे छोटे आंसू यहाँ यहाँ जैसे लटके हुए थे। मैंने कस के दादी को गले लगाया और दादी से पूछा, दादी क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे गले लगाते ही पहली बार मेरी दादी फक फक कर सिसकियां लेकर रोने लगी। और उसके बाद उन्होंने अपने तकिए के नीचे से पता है क्या निकाला? उन्होंने निकाली 2 मैगजीन्स, 2 हफ्ते की कर्मभूमि मैगजीन, जिसके अंदर वही कहानी आती है, वही लेखिका की कहानी जिसे वो सुनकर इतनी खुश हो जाया करती थी। उन्होंने फिर मुझे बताया कि तेरे ना होने पर जब ये किताब आई ना, मैंने उसके पन्ने खोले और हर हर तस्वीर पर अपना हाथ फेरा, हर अक्षर पर अपना हाथ फेरा कि काश मैं इसे पढ़ पाऊं, काश मैं समझ पाऊं, काश मैं इन अक्षरों को पहचान कर इस कहानी का सार समझ सकूं। पर मैं वो नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो तुझ पर निर्भर करती हूँ ना। मैं भी ना समझ थी और फट से बोली, तो दादी क्या हुआ, किसी और से बोल देती, कोई और पढ़ के सुना देता। पर दादी को जो वो झिझक थी ना किसी को ये बताने की कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें सब कुछ दिया, धन दौलत रुपया पैसा सब चीज, लेकिन किसी ने भी उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं दिया। किसी ने भी उन्हें वो स्वतंत्र होने का मौका नहीं दिया जो शायद पढ़कर स्कूल जाकर वो पा सकती थी। उस दिन दादी ने मुझे बहुत धीरे से कहा, बेटा मैं पढ़ना चाहती हूँ। सच बताऊं, दादी की ये बात सुनकर मेरी जोर की हंसी छूटी। दादी अपनी शक्ल देखी है तुमने? अरे तुम्हारे बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है और सारे घर की काम करते हुए तुम्हें पढ़ने का टाइम कब मिलेगा? पर दादी ने मुझसे वादा किया कि आने वाली नवरात्रि तक वो पूरे के पूरे अक्षरों को पढ़कर समझकर सीखेंगी और साथ के साथ इस कर्म भूमि में आने वाली सिर्फ एक वही कहानी नहीं बल्कि पूरी किताब पढ़ डालेंगी। यकीन मानिए दादी का वो जज्बा, हाँ जरूर मैंने दादी को अक्षर सिखाए, उनको पढ़ना सिखाया, लेकिन जो जुनून उनके अंदर था पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो काबिले तारीफ था। और यकीनन दादी ने नवरात्रि खत्म होने से पहले ही पढ़ना सीखा और ये बात उन्होंने आसपास की अपनी सारी सहेलियों को भी बताई और सबके सामने इस हफ्ते की आई हुई कर्मभूमि, जो मैंने उन्हें एक अखबार में लपेटकर बतौर तोहफा दी, उन्होंने वो सबके सामने पढ़कर दिखाई। बात बहुत छोटी सी थी, बात बहुत छोटी सी थी और ये मेरी आप बीती नहीं, एक्चुअली हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर, ये कहानी है जो सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। पर ये सचमुच, दिस इज नॉट अ फिक्शनल स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी विच हैपेंड इन द ईयर 1952। और यही बात जब मलाला यूसुफजई ने कहा कि वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, तो इसीलिए जो लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों की शिक्षा आज ही नहीं पहले के समय में भी कितना जरूरी था। बट इतनी खुशी की बात है कि आज ये पहल इतने जोर शोर से की जा रही है और ना सिर्फ उनकी एजुकेशन को लेकर बल्कि उनके सभी राइट्स को लेकर, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू संदीप एंड द एंटायर टीम ऑफ SES फॉर हैविंग मी हियर। I would not take much of time and I hope you enjoyed the story। और कहीं ना कहीं शायद आज की इस वेबिनार का एक टोन सेट करने में मैं शायद कामयाब रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी। थैंक यू। थैंक यू स्वेच्छा, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। एंड
मैं अगर अपने टाइम की याद करूं तो मैंने भी शायद अपनी नानी को, जिन्होंने जो स्कूल नहीं गई हैं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया है। तो मैं इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर रही हूँ। एंड you set the tone, you really set the tone. Thank you for this. थैंक यू And सो मच। thank you. So next हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले स्पीकर को बुलाते हैं, जो हैं मेधा कोहली, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ गर्ल्स इफेक्ट. Medha work as a project manager for Girls Effect India, working on Chaja Girls Effects brands in India. She managed Chaja chatbot Bol Behan that's provide adolescent girl and young women with a private online space where they can access trusted, non-judgmental advice on sexual and reproductive health. After launching Bol Behan on Facebook Messengers, Medha has led the launch of the chatbot on WhatsApp. So we welcome Ms. Medha. Medha Goli, over to you. Thank you. थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे को इनवाइट करने के लिए भी, एंड जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरीज व्हिच आर इतने सुंदर तरीके से आपने बताया है। बहुत टाइम हो गया, मेरी दादी मेरे को ऐसी स्टोरियां सुनाती थी, एंड दादी के बारे में स्टोरी इस तरह से सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आई थिंक हमारे साथ काफी सारी गर्ल्स भी हैं, है ना, अडोलेसेंट गर्ल्स। आप सबको बहुत ही एक्साइटेड है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे गर्ल्स भी होंगी। मैं जल्दी से आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मैं करती क्या हूँ फॉर एवरी वन ओवर हियर। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मेरे कहा गया था, मैं गर्ल इफेक्ट में काम करती हूँ। गर्ल इफेक्ट एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ स्पेशली गर्ल्स के लिए उनके हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, इन सारी चीजों पे कंटेंट बनाते हैं। तो छाजा जो है वो हमारे गर्ल इफेक्ट इंडिया का एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम यही इन्हीं टॉपिक्स पे गर्ल्स की लाइफ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स के ऊपर तरह तरह का कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारे शोज बनाते हैं जो यूट्यूब पे जाते हैं। हमारे पास एक चैटबॉट भी है जिसके जरिए हम गर्ल्स को सेक्स एजुकेशन, बॉडी, रिलेशनशिप एडवाइस, इन सारी चीजों के ऊपर हम उन्हें के बारे में हम बात करते हैं एंड एजुकेट करते हैं। एंड एक फेसबुक ग्रुप भी है हमारा जिसका नाम है बक बक गैंग, जिसके जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि इन सभी प्रोग्राम्स के जरिए जो छाजा में है, चाहे वो हमारा कंटेंट हो या चैटबॉट हो या एक फेसबुक ग्रुप हो जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसी स्पेसेस क्रिएट कर पाए जहां गर्ल्स अपने मन की बात खुल के कर पाए। चाहे वो दूसरों के साथ एक स्पेस ढूंढने के लिए हो या अपने खुद के डाउट्स के आंसर्स ढूंढने के लिए एक पर्सनल जर्नी जैसी बन जाती है। एंड ये सब कुछ करने के अलावा, जैसे मेरा जो टॉपिक मुझे दिया गया था कि गर्ल्स राइट्स एंड स्पेशली टेक्नोलॉजी और मीडिया इसमें कैसे का इसमें क्या रोल है लड़कियों के राइट्स को लेकर। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हम सभी के लिए यहाँ पे, क्योंकि एक तो हमें पता ही है कि कोविड ने काफी हद तक चीजें चेंज कर दी लाइफ में। क्योंकि पैंडेमिक था, क्योंकि लॉकडाउन था, काफी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें फोन्स देने लगे, टैबलेट्स देने लगे, लैपटॉप्स देने लगे, क्योंकि पढ़ाइयाँ सिर्फ डिवाइसेस पे होती थी, सिर्फ इंटरनेट के जरिए होती थी। कोविड से पहले हमने हमने जितना समझा था लड़कियों से बात करके, रिसर्च करके, इंटरव्यूज करके, जो डिजिटल डिवाइड है, जेंडर डिवाइड फॉर टेक्नोलॉजी, जिसका बेसिकली यही मतलब है कि बिफोर कोविड हमने देखा था कि चाहे छोटे से छोटा घर हो या बड़े से बड़ा, जब फोन और इंटरनेट यूज की बात आती है तो लड़कियों को लेकर काफी के प्रोटेक्शन के नाम से ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट करी जाती हैं लड़कियों को। एंड ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ हर कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, ये लड़कियों को अपने एजुकेशन में, फाइनेंशियल एजुकेशन में, अपनी हेल्थ को लेकर इन सभी मामलों में बहुत पीछे छोड़ सकता है।
एंड इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें पता है कि जब अडोलेसेंट्स होते हैं, हम सब गर्ल्स 15 की उम्र से शुरू होते होते 21-22 की एज तक सभी के मन में आफ्टर प्यूबर्टी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं अपने बॉडीली चेंजेस को लेकर, पीरियड्स को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, और ये सारी चीजों को आंसर करना बहुत जरूरी होता है। एंड इसीलिए हम गर्ल्स के लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे वो इन चीजों के बारे में खुल के बात कर पाए, क्योंकि ये जरूरी है उन्हें अपनी हेल्थ के बारे में खुद से डिसीजंस ले पाने के लिए। मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूं, कौन मुझसे मुझे गुड टच एंड बैड टच, मैनिपुलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे काम के जरिए हम ये समझ पाए कि हम किस तरह मीडिया या कंटेंट बनाकर, टेक्नोलॉजी को यूज कर कर लड़कियों तक पहुंच पाए, ताकि उन्हें वो सभी इंफॉर्मेशन मिले जो कि एक बेसिक राइट है ना। इट्स अ ह्यूमन राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज anything related to your health and body is very very crucial so that गर्ल्स कैन मेक डिसीजंस अबाउट देमसेल्व्स, ताकि आप खुद के डिसीजंस खुद ले पाओ। ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, ताकि वो अपनी नीड्स, अपनी एस्पिरेशंस पूरी कर पाए। एक बहुत अच्छी चीज हुई है कोविड के जरिए कि अब एक्सेप्टेंस है कि सब लोग यूज कर पाए इंटरनेट को, फोन को, सबके पास है। बट आज भी जो जेंडर डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, वो काफी बड़ा है। गर्ल इफेक्ट में हम इसके बारे में भी रिसर्च करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से समझे कि गैप्स कहाँ पे हैं, किस तरह, क्या है वो गैप्स, और किस तरह हम उन गैप्स को फिल कर सकते हैं, कि हम समझ पाए कि लड़कियों की नीड्स हैं क्या, और हम कैसे उन नीड्स को पूरी कर पाए। तो बस ऑनलाइन स्पेसेस हम फैसिलिटेट करते हैं, इन स्पेसेस से सॉलिडारिटी जिसे कहते हैं, सेफ स्पेस जहाँ पे लड़कियां बेझिझक, बिना वो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके और मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके सोसाइटी में जो स्टिग्मा है, जो टैबू है, स्कूल में भी वो चैप्टर स्किप करके पढ़ाए जाते हैं, किसी से पूछने में शर्म आती है। लेकिन फिर कहाँ पूछें, कहाँ समझें, तो कहाँ हम एक ऐसी वो स्पेस बना पाए लड़कियों के लिए कि वो ऐसे अपने जो सवाल हैं वो खुल के पूछ सकें दूसरी लड़कियों से जो उनकी एज की है, उनके साथ इन चीजों के बारे में बात कर सकें। एंड इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके वो बहुत ही इंफॉर्म्ड डिसीजन बना सकें अपने लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर। हम आप सभी ने न्यूज पढ़ी होगी कि अभी अभी हार्वर्ड की एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, और उनकी जो रिसर्च थी वो इसी चीज पर थी कि जब 1950s 1960s में बर्थ कंट्रोल पिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद हमें ये पता चला कि जैसे ही बर्थ कंट्रोल पिल्स इंट्रोड्यूस हुई, जो अर्ली मैरिजेस थी, जो बहुत ही कॉमन थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता था, बाहर भी बहुत ही यंग एज में लड़कियों की शादियां हो जाती थी, बट वो कम हो गया। वो इसलिए कम हो गया क्योंकि अब लड़कियों के पास एक वो टूल था कि उन्हें पता था कि अगर बर्थ कंट्रोल पिल है तो मतलब मैं काम कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ प्लान कर सकती हूँ इस तरह से कि मैं पहले अपनी पढ़ाई करूं, फिर काम करूं, फिर चाहे शादी बच्चा जो भी करूं। तो वो इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल है एक लड़की के इंडिपेंडेंस के लिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स होते क्या हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, एंड ना सिर्फ इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, पर जैसे जैसे हम ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, उससे जो सोसाइटी में थोड़े से, जैसे टैबू और स्टिग्मा कहते हैं, जैसे मतलब
थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नहीं नहीं लड़कियों को फोन दे दिया तो बिगड़ जाएंगी, ऐसे जो ख्याल हैं इनको हम तोड़ते हैं। ये मिथ, ये सारी चीजें मिथ्स हैं, ये तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही फ्यूचर फेसिंग नजरिए से, बहुत ही बैलेंस्ड नजरिए से आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि इंटरनेट से लड़कियां नहीं बिगड़ती हैं। इनफैक्ट हमारी रिसर्च में हमने ये भी देखा है कि भले ही कोविड के बाद दोनों लड़के और लड़कियों को फोन्स दिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए ज्यादा इंटरनेट लड़कियां यूज करती हैं, पर रिस्ट्रिक्शन भी लड़कियों पे ही होता है। अब हमें क्या पता लड़के क्या कर रहे हैं ना। तो मजाक था, बट ये सारी चीजों से हमें ऐसे ख्यालात से आगे बढ़ना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन से देखना चाहिए। इंटरनेट से लड़कियां नहीं बिगड़ती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल अगर कोई लड़की ले रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकल रिलेशनशिप में है, और अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप में है भी तो ये उसका राइट है, ये उसकी बॉडी है। बेसिक ह्यूमन राइट्स को कोई भी किसी से भी नहीं ले सकता है। जो बॉडी ऑटोनॉमी कहते हैं, जिसे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट, फॉर यू टू बी एबल टू रियलाइज योर ओन राइट्स एंड लिव योर लाइफ, बिल्ड अ लाइफ। तुम अपने करियर बना पाओ। आजकल कितने करियर, हर चीज फाइनेंस से लेके पढ़ाई से लेके फाइनेंस तक गूगल पे हो रहा है, पेटीएम हो रहा है, पेमेंट्स डिजिटल हैं, पढ़ाई डिजिटल है, करियर्स भी डिजिटल हो रहे हैं। और जब तक हम इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए टेक्नोलॉजी और मीडिया के एक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे नहीं, तब तक फिर हमेशा यही लगे रहेगा कि अरे नहीं लड़की है तो इसको तो कोई ऐसी ही जॉब करनी चाहिए कि ये जल्दी घर आ जाए। नहीं जरूरी, हर चीज का सोल्यूशन होते हैं आज। अम, लड़की है तो इसे बस उसी तरीके के जॉब्स करने चाहिए जहाँ पे इसको ऐसे वैसे कपड़े ना पहनने पड़े। इन सारे ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट करती हैं। एंड हाँ, बस आई थिंक टेक्नोलॉजी और मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे प्ले आउट हो रहा है, एंड ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं। तो why not use it for a good purpose? Why not use it for girls? Because a right to digital access is ultimately at the end of the day a right to it's a basic fundamental human right, and वो लड़कियों और लड़कों को इक्वली मिलना चाहिए सब। एंड या दैट्स इट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन send it my way, but that's all. Thank you so much for inviting me. This is a wonderful session. SES पे और ग्लो पे आप लोग बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हो, एंड यहाँ पे जो गर्ल्स हैं आपको मैं बहुत ही आई विश यू गुड लक। एंड आई होप कि अगर आप ये जूम कॉल अटेंड कर रहे हो मतलब आपके पास फोन्स और इंटरनेट हैं, और आप उस फोन और इंटरनेट का बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हो। और आप जाके छाजा भी देख सकते हो जो कि हमारा ब्रांड है। आप जाके बोल बहन भी देख सकते हो जो हमारा चैटबॉट है, जो काफी चीजों में आपकी हेल्प कर सकता है इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू। Thank you, Meida. Thank you so much. It was a great information. Uh, yes, that's true. Before COVID, we don't have much access about it. Like, especially for the girls, there's no access for internet or browsing it. Or even like if girl touch a phone, then people will say, "ये तो बिगड़ गई है. She's a bad girl." And yeah, thanks to COVID, we have access to the technology and we can work on it. And thanks to you for making it work very well and introducing us with the chatbot and Chaja. Thank you so much, Meda. Yeah, so let's move on to the next. We have our guest speaker, Eliana Katz. Eliana Katz is a seasoned development professional
with successful career in both non-profit fundraising and special events planning for high-profile charitable cause. She has held positions ranging from Vice President Development, Director of the Special Events, to Director of the Development and Executive Director of a small nonprofit. Ileana's career has afforded her the opportunity to serve diverse organizations, including Alexis Production, the Peasant Waxman Center, Children of Chernobyl, the Foundation for Ethnic Understanding, and the Work Circle. Born in Canada, educated in Texas, New York City has become her home and the world of global. So let's welcome Eliana. And Eliana, please share your experience for Girls AI Girls project. Thank you so much. Everyone, please welcome Eliana. Can you hear me? Yeah, Can you see me too? yeah. Terrific. Hi, my name is Ilana Katz, and I'm the development officer at Asia Initiatives in New York City. And I really I want to thank you for the opportunity to speak with you today. And I've been learning so much. A bit about us. The mission of Asia Initiatives is to leverage the power of social capital to promote healthcare, education, improve livelihoods, and sustainable development, striving to bring positive change in the quality of life of people in underserved communities, with a particular focus on women, girls, and their families. Our initiatives utilize transformative methodologies and technologies to empower people to realize their full potential and become the stakeholders of their own success. Asia Initiatives works with local nonprofits to implement our social capital credits methodology known as SOCs, which allows people to undertake social good projects and earn credits for completing those projects that they can then redeem for essential goods and services for themselves. Our projects span over 25 sites across India, Kenya, Ghana, and the United States. Asia Initiatives has been thrilled to be collaborating with SES on the UDAN program for 6 years now, ultimately serving thousands of girls using a methodology that has proven to be very successful. The UDAN program is designed to support young girls who live in resource-poor settlements of Lucknow, Uttar Pradesh, and have inadequate support for their education and development, and have to deal with issues such as gender inequality, early marriages, and poverty. The project aims to improve the livelihood potential of the girls by ensuring that they stay and succeed in school and teaching them life skills necessary to address the challenges they face. Most importantly, the project not only prepares the girls for a better future, but also positively impacts the lives of their families, communities, and society at large. Apart from educating the girls in digital and English language literacy and social emotional learning, the program integrates the value and essence of community so that local issues can be identified and resolved communally. In the program, leveraging the power of social capital, SOCs, and utilizing our methodology known as cascade of upskilling, girls can earn SOCs by mentoring 2 younger girls and then redeem them for their own digital upskilling, English language classes, life skills, or job-related skills. Asia Initiatives to date has set up 3 digital literacy centers where the girls can redeem their SOCs that they have earned for the opportunity to study digital learning and coding,
on laptops or Raspberry Pis. Some have gone to land jobs, and we're very, very proud of that. The program began with 500 girls, and we have now reached 2,000. 2,000 girls who have been taught real-world skills, and for those who enter the workforce, such offerings as resume writing and interviewing skills and general comportment. Subsequently, the Zoom Sock Buddy program was added, where girls are connected to mentors with whom they can practice speaking English. Also, Asia Initiatives introduced Global Glow, whose out-of-school programs mentor girls to advocate for themselves and make their communities stronger. They now run 5 Glow clubs in that same region. So older girls who have earned a certain number of socks get the opportunity to be a part of the Glow clubs, which meet once a week and delve into the question of empowering girls in a more in-depth manner. With further introductions to other partners such as Frown Power and Kids Who Code, the Udaan project has continued to grow and provide additional opportunities, including learning Scratch, computer programming, as well as life training sessions for some of the older girls. We have come a long way from the program that began in the informal urban settlements of Lucknow with 10 tiny gender resource centers, which were essentially safe spaces in which talks were held that would otherwise be considered taboo, including such topics as menstrual health, hygiene, and gender equity. Over the years, there have been wonderful examples of SES leaders. One of these is Manisha Upadhyay. Manisha is a 22-year-old youth leader hailing from the village of Azmabad near Ujjain, who has emerged as a beacon of change. Over the past year, Manisha has transformed parental involvement in school, raising it from virtually nil to an impressive 75%. Her leadership has taken on a broader scope, now guiding a youth group towards empowerment through a foundation of constitutional values and meaningful social action. Through her role as a mentor, she hopes to inspire young girls to challenge traditional gender roles. For taking initiative and agency to empower the young girls all around her, and understanding the need for family and community participation, Manisha earned the 2023 Asia Initiatives Ban Ki-moon Young Leader Award for empowering women and girls. We hope that her agency and initiative speaks to many, many more young girls. Thank you. Thank you so much, Alana. And yeah, Udaan is very great project for us. Our girls are getting so much knowledge, especially about the digital technology, and they're coming forward for it. So thank you so much for being a trusted partner from so many years and being in touch and support for us. Thank you so much, Alana. You're very welcome. So let's move on to the next speaker. We have Dr. Pushpanjali Singh. She holds a PhD degree in chemistry from Kanpur University, specializing in chemical kinetic. Since 2006, she has been actively engaged in the field of chemical kinetic and applied chemistry, amassing over 16 years of experience in techniquing and mentoring and 17 years in research, with more than 9 years of teaching and research experience abroad. She has collaborated with the institutions such as Addis Ababa University, Government of Ethiopia, Ambo University, Government of Ethiopia, and other top-tier institutes in India. So let's welcome Professor Dr. Pushpanjali Singh, Associate Professor, SMS University. Over to you, Pushpanjali, Dr. Pushpanjali. Thank you.
Hello. Am I audible, ma'am? Yes, Dr. Praspanshu. Yes, you're audible. Thank you, Thank you. Tanishka. Thank you so much. A very good evening, everyone. This is Dr. Pushpandi Singh from School of Management Sciences, as Tanishka has told about me. Thank you for the wonderful introduction, Tanishka. First of all, I would like to say thank you to Sandeep Srivastava sir for inviting me here. It's a really, I'm humbled, I'm honored to be part of this wonderful seminar. So actually, I'm going to do the presentation on the empowerment of the girl through the education. So let me start my presentation. Yeah. Is it visible? Yeah, Hello? ma'am, it's visible. It's visible. Visible. Just a minute, ma'am. I think there's some. I think. I'm getting a problem, just a minute, because it's not visible to me. So where I'm jumping actually. Just a minute, ma'am. Just I need a actually help. Just give me a second. Now it's visible, ma'am? Yes, yes, it's visible. Yeah. Shall I start my presentation? Yeah, sure. Actually, you can see this. I came up with some words. Like we can see, promote, protect, respect, right of the girls, because she can lift her country out of the poverty. I came up with some data actually. Like we can see this, she will be the inspiration, but first provide her education. Or education is the one thing no one can take away from you for the girls. Like education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Yeah, we know, I think everybody know, every girl know about the Malala Yousafzai. She's an educational activist, and even she has started the protest against when the Taliban has banned the girls education in Pakistan. Even the Taliban has shot him also. They shoot her when she was protesting. So what she's saying actually, what is her saying, that let us pick up our books and our pens. They are most powerful weapons. So Malala Yousafzai, like you go girl, fight for our equal education. Now we'll come on the, I'll start my presentation actually. As we know, the education is a fundamental right for every Indian girl. As per the Right to Education Act 2009, the India is actually second most populated country in the world,
and in that nearly 48.5% population is a female, and it's also fastest growing country. The population is keep increasing, but the women literacy rate is far below from the global standard. So our constitution accord equal rights for the both men and women in every sphere of life, including the right to education. However, the reality is very different. We all knows actually, but still we are moving to other betterment. Actually, the girl child is a most often than not given to the education. In some cases, they are if they are giving they are given with the education only primary basic education. So the number bears witness to our country that we know is keep the sex ratio of 943 females per thousand of males. Then how can we hope for the India progress when half of our other societies doesn't have a basic kind of education? So this is a right to education. Like as I told, in the previous slide also I said in 2009 the Right to Education Act came in the existence, which mandated that that it is a right of every girl child to obtain the every child, not for the girl. It is not like stating that only girls. It is saying every girl every child has to obtain the at least minimum amount of education to program to make it compulsory for the all the children as per the right RTE Act. It should be age up to 6 up to 14 age have unconditional right and access to educational opportunity. This was the first step in the right direction, but not yielded the result as we were expecting. But even today, even in 2023, we can see the gender gap is there. Girl child education is lagging far behind in the India. So girl child education, we can say this is a pivot for the families, communities, and societies today. Investing the girls' education transformed the communities, countries, and entire the world. So girls who are able to get educated will be able to join the workforce and earn livelihood, take care of their families, and marry the mature and responsible age. Like a girl is saying, we can see this picture. Little girl with dreams become a woman with vision, because we know these phrases. Let the things happen, because things will become the dream, and after some time, with the time, these dream will become the vision. So importance of the girl child education, this is really important, because in October also we can say we are actually celebrating the girls month. Actually, the importance of the girl child education, educating the girl and women positively impact the economic, social, and health standard. Girls education reduce the inequality in the society. Education empowers and marginalize the women and help them build better future for themselves or for the families where they are living, or where they are going to be the part of the other family actually after marriage. Educated girls are less likely to marry at the young age girl and more like young age, and more likely to raise the healthy children. The women who complete the higher education and acquire the skill dramatically increase the lifetime earning. Higher female literacy rate reduce child mortality, because the educated woman is not going to think, not going to ask that I need a only boy, I need only son. They will also, because our old time they are everybody is expecting only the boy. So we have to save the girl. If woman is educated, she will be able to understand, and she can fight for the girl. Education lower the crime rate. Educated society is the more stable and recover the faster after the conflict. Kids of educated women are less likely to experience malnutrition or stunting. Like Malala Yousafzai, again I will talk about her because everybody knows about her. She has actually she lot many quotes. The one of that is this: with guns you can kill the terrorists,
but with education, you can kill the terror. So educated woman is not going to actually fear from anyone. She was educated, she was having the different family background, because from where she got the birth, they were killing the girl. Actually, they were not celebrating in that Malala town. They were not celebrating the birth of girl, but her father has celebrated her birth, and she has came up with this kind of a success actually. Challenges to achieve the maximum girl education, because lot many challenges are there, but if we will do, the government will do, or we are going to do something, then these challenges can be overcome. Like apart from ensuring the enough school and their easy access to girl, many key elements are needed to be ordered to before the girls education can increase and can run the smooth course. There are several issues like girl safety issue, because still still the village people and sometimes the peoples are here, they doesn't want, they're scared over distances. And now the atmosphere in this educated society is also like that. They're scared of distances that their girl need to travel to receive the education, especially in a rural area where neither road nor transportations are available. Like access to free education, if government are going to give the free education to the girl, so by eliminating any expenses and the cost burden to the families, will make them more receptive to the idea of giving education to their daughters. The academic curriculum means, apart from the traditional curriculum methods, I think we should apply that kind of a method, like a skill development kind of a thing. There should be the vocational kind of a courses. So if the girl is going to learn, she's going to learn some skill, and she can by the skill she can earn something. Then parents will be they will be inspired, and they will inspire to send their girl to daughters to the school. The language based education, because lot many parents are there, they are saying हम english का क्या करेंगे. So they want their girl to get educated in the mother tongue. So in a native language centric education is always preferable for that kind of, to enhance the girls education, the freedom to study with a no burden of household chores. Actually, this will enhance the girls, they will improve the every girls. If you will do like that, then she will go and she has not to work at the home. It will inspire the girls. Okay, I want to learn, because some cases are there, they are sending, parents are sending her, and after coming back she has to work. So she also doesn't want to actually learn, because she's thinking I have to work, so why to learn? Let it be like that. So will come uh, like constitution provision and special laws to support the women empowerment, like the importance of women as a important human being was recognized by the, when the constitution of India, which is not only provide the equality to women but also empowering the nation. The number of articles of the constitution repeated toward the socio-economic development of the women. These are as follows, like article 14, it is saying the man and woman have equal rights and opportunities in the political, economic, and social spheres. Like Article 15, it is saying it forbids the discrimination against any civilians on the basis of religion, sex, and caste, etc. Article 16, it is provide equivalency of opportunities in a matter of public appointment for all civilians. Means though no disparity will be there, there will not be the girl will take the appointment and boy will not, or boy is going to get this appointment and girl is not going to get. The Article 39, this direct all the state has to secure equal payment for the equal work for the both man and woman. Article 42, it is saying it seeks to ensure humane work conditions for the work and maternity leave. Means the Article 42 is saying there should be a provision for the maternity leave for the woman. It means not that if she is going to give birth, then okay, there is no job for you. So that kind of provision should be there, and there's Article 42 is saying actually. Uh,
Except that government has also constituted few specific laws to shield the interests of women and reform their status. Like Hindu Succession Act 1956, it secures the human right to parental property. Parental property means now the girl also can take the part in the parents. Dowry Prohibition Act in 1961, it directly declares giving and taking dowry both shall be void, and thereby prevent the exploitation of a woman. Medical Termination of Pregnancy Act 1971. This act to legalize the termination of certain pregnancy by registered medical practitioners on the ground of physical and mental health. Like Equal Remuneration Act 1976. This act provides for the payment equal remuneration to the women and man workers to avoid discrimination on the ground of sex. Like Criminal Law Amendment Act 1983, it seeks to stop various type of crime against the woman. Indecent Representation of a Woman Act 1986. This act prohibits the indecent presentation of a woman or girl through the advertisement or by the poster presentation or by the painting or by any means. This is completely prohibited. Now, what the government is seeing, actually, what we also want, the dream of a gender equal world in education, like triple BP, means Beti Bachao, Beti Padhao. That campaign we know all the launch by our honorable Prime Minister by Narendra Modi ji on 22nd January 2015 in a Panipat, Haryana, to protect the interests of the girl children and ensure their education. It mainly targets the clusters in Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab, Bihar, and Delhi. Like, see, that is his dream actually. Beti Bachao, Beti Padhao. It was a logo actually. See, friend, daughter, wife, sister, and mother. Means if you will not save the girl, not educate her, then अगर बेटी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा. We come on the point actually. Understanding the seriousness of the situation, the Indian government appeared with the new national education policy, we all know actually, which was having the main objective to create the educational ecosphere and increase the learnness of the girl across the nation. So there are some initiative actions that reforming the Indian education landform, like National Education Policy 2020. Actually, this came in the 5+3+3+4, and that has been launched in the 29 July 2022. This is NEP, Reformation of Indian Education System. Like replacing the previous education system, because this has replaced the previous education policy. It was 1986. That has been replaced in 2020. This came with a global creating on education system and transformed the nation. Because the previous education policy was 10+2+3 structure. Now with a new pedagogical structure, 5+3+3+4. So it is actually NEP policy which came to actually to reform the girls' education system. Mainly, it is having the 5 pillars. Access means you should reach there easily. Equity, then quality, then affordability means the cost should not be so much that the people or students cannot afford that, and accountability. So NEP aims to recognize the need and evaluate the high order skills such as creativity, critical thinking, problem solving, visualization should be there, and idea generation. Means this time the education should be something like that students or the learners should, it's actually learner centric. Means that before the teaching was there teacher centric, now it's a learner centric. Learners means should understand all the things, they should get some kind of a skill. Like it is emphasize the multidisciplinary learning, and no separations are made between the vocational and academic courses. Under the new policy,
government aim to link the social gap in participation, access, and learning outcome in school education, like mark of 100% gross enrollment ratio or zero school drop by 2030. This is also kind of an initiative by the government, Nipun Bharat scheme. The full form of a Nipun is a national initiative for proficiency in a reading with understanding the numeracy. It is the meaning of Nipun. Is the another important initiative that aim to improve the foundational literacy and numeracy. The Ministry of Education, Government of India has created a well-defined guidelines which will ensure the implementation of a Nipun Bharat is smooth and effective. The initiative will support the students across the India and national, state, districts, blocks, and school level. Nipun Bharat will use the existing educational structure and work with the following areas like physical and motor development, cognitive development, moral development, socio-emotional development, and literacy and numeracy development. Nipun Bharat also clearly specifies that priorities and agendas for all the Indian states and union territories to significantly improve the foundational literacy and numeracy. Means everybody should be able, every child should be able to actually work with the numbers. Nipun Bharat will ensure the proficiency in the foundational literacy and numeracy for every child in the country by the end of the grade 3 by 26 to 27. Like it was a logo for that. निपुण भारत का सपना, बच्चे समझें भाषा और गणना. Now, I want to conclude my speech by saying that girl education is really important because they're the first teacher for their children. Educating a girl is not a burden. It is an investment for our future. As a girl grows, a nation grows. Education unlocks the true potential for the person who should always value the education of the girl child. Thank you so much for listening me so patiently. Thank you so much. Thank you, Dr. Pushpanjali. What information from your side. We come to know about the articles and the policies. Thank you so much for it. Thank you so much. So let's continue and move to the next speaker. And let me introduce her. She is Krati Prakash. She is the state lead for breakthrough in Uttar Pradesh and Jharkhand. She is currently oversees project related to the empowerment of adolescent and youth in these states. For her, working on social cause, especially gender issue, is not just a passion, but a guiding mission in her professional and personal life. She embarked on her journey in the development sector with Breakthrough in 2008 and has accumulated 15 years of experience in this field. Gender and human rights issues have been central to her work since the early years of her career. Her remarkable journey from volunteer to the state lead at the Breakthrough is a testament to her unwavering commitment to the ideals she upholds, supported by her hard work and leadership potential. So, everyone, please welcome Kriti Prakash, who will address gender-based violence, state lead Breakthrough. Kriti Prakash, over to you, ma'am. थैंक यू सो मच. और मैं सभी स्पीकर को सुन रही थी और सबसे बहुत कुछ समझने को मिल रहा था, सीखने को मिल रहा था. और मैं यहाँ पे SCS को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे हम सब बात कर रहे हैं. और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब मैं इन प्लेटफॉर्म्स में एडोलेसेंट्स को देखती हूँ और वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सुनते हैं. तो मुझे लगता है कि मैं अपने सत्र में मैं बोलूंगी भी और साथ में अगर कुछ एडोलेसेंट्स भी अपनी बात को रखें तो बहुत ही बेहतरीन होगा और इंटरेक्टिव होगा. और मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. एजुकेशन मैं भी मानती हूँ कि एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एडोलेसेंट एम्पावरमेंट के लिए. पर उसके साथ में कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है. वो फैक्टर ये है कि कम्युनिटीज का एंड फैमिलीज का रोल क्या है उसमें.
और जो हमारे सिस्टम्स में जो नॉर्म्स का जो रोल है, तनिषा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? तनिष्का आपका हैंड रेस दिख रहा है मुझे, आदिति का हैंड रेस दिख रहा है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शायद प्रति जी हम अपनी बात कर लें, फिर हम लास्ट सेशन में बच्चों से बात कर लेंगे क्योंकि उनका भी सेशन है। आई थिंक आवाज भी नहीं आ रही है ना, एवरीबॉडी इज गलती से रनिंग हो आउट ऑफ गया टाइम आई था। थिंक ना। नो ठीक मैम, है, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। प्रति जी आप म्यूट हैं क्या? शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ यस, यस। तो मैं यही बात बोल रही थी कि परिवार और जो समाज है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो मुझे बहुत जोर से लगता है, इस चीज पे यकीन भी है कि जब तक हमारा परिवार और हमारा समुदाय एडोलेसेंट इश्यूज पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक हम बहुत, जो ये लड़ाई है उसको हम और लंबी खींचेंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल तय बात है कि जिसकी लड़ाई है उसकी अगुवाई होनी चाहिए, पर उस अगुवाई को करने के लिए सपोर्ट सिस्टम हम समुदाय में किस तरह से क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली जब हम लड़कियों को पढ़ने की बात करते हैं तो जो नॉर्म सिस्टम है वो बहुत प्रभावित करता है। वो ये कहता है कि अगर आप पढ़ोगे तो एक सेट पढ़ाई के तहत आपको देखा जाएगा, एक मापदंड तय किया जाएगा, परिवार में लड़कियां हमारी यहीं तक पढ़ती हैं, उसी उसी पढ़ाई के दायरे में आपको पढ़ना होगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है। या हमें जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आज भी हम सन 2023 में 2023 में बैठे हैं, हम बहुत सारी लड़ाइयां लड़े हैं, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है परिवारों में, तो लड़के सबसे आगे आते हैं। हम अपने लड़कों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आज भी। बेटर एजुकेशन के लिए जब भी बात होती है, हमारे घरों में प्रायोरिटी लड़कों को दी जाती है। अगर फोन होता है घरों में, जब कोविड के दौरान हमारा भी अनुभव रहा कि जब फोन थे घरों में, अगर एजुकेशन की बात आई, ऑनलाइन क्लासेस की बात आई, तो वो एक्सेस लड़कों को दिया गया। जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन के प्रति हो, चाहे वो हेल्थ के प्रति हो, वो बहुत कम है, अपेक्षाकृत बहुत कम है। जो अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से हम बात करें कि लड़कियां आगे बढ़े, लीडरशिप में आए, वो लीडरशिप में तब तक नहीं आएंगी जब तक हम लड़कियों पे हो रहे इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बढ़ाएंगे अपने परिवार के लेवल पे। ये केवल एजुकेशन है, हेल्थ नहीं है, लेजर टाइम के लिए भी है, लेजर टाइम एक्सप्लोर करने के लिए भी है। हम हमेशा हमारे नॉर्म्स में ना कि खाली बैठना बहुत गलत बात है। खाली अच्छी लड़कियां जो होती ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली नहीं बैठना है, कुछ तो कुछ करते रहना चाहिए। पर कभी हम उनके वेलबींग एंड मेंटल पीस के बारे में बात नहीं करते। और आज भी मुझे भी, मैं जिस परिवेश में बड़ी हूँ, मुझे भी लगता है कि खाली बैठना तो बहुत ही गलत बात है। हमको कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि वो सिखाया गया है। लेजर टाइम, अच्छी लड़कियां लेजर टाइम में नहीं जाती, लेजर टाइम नहीं दे लेती है, उनको कुछ ना कुछ करना है। तो हम जिस जिस परि हम जो परिवेश दे रहे हैं, मुझे लग रहा है उस पे भी बहुत सवाल उठाने की जरूरत है। हमें लेजर टाइम्स के बारे में बात करने की जरूरत है, खासतौर पे एडोलेसेंट्स गर्ल्स के लिए, जहाँ पे वो अपने आइडियाज को एक्सप्लोर कर पाए, अपने लिए सोच पाए, और वो खुद के वेलबींग के बारे में बात कर पाए, खुद के लिए बात कर पाए, जहाँ पे वो खुद की आइडेंटिटी के बारे में बात कर पाए। परिवारों में आज भी एडोलेसेंट्स गर्ल्स अपनी आइडेंटिटी को ढूंढती हैं। वो इस आइडेंटिटी के साथ जाती है, या तो वो पिता की आइडेंटिटी के साथ अपने आप को एसोसिएट करती है, या शादी होने तक का वो वेट करती है कि पति की आइडेंटिटी। तो मुझे लगता है उस खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म जो देगा वो हमारा परिवार देगा। जब वो उसकी आइडेंटिटी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, आइडेंटिटी बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करेगा, उसकी उसकी लीडरशिप पे बिल्ड करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट तभी शुरू होगा जब हम सोचेंगे, जब हम कम्युनिकेट करेंगे। हम एडोलेसेंट्स के साथ में, लड़कियों के साथ में उनके
करियर एस्पिरेशंस को बारे में बात करेंगे, क्योंकि करियर एस्पिरेशंस ऐसा होता है कि हम उस पे बात नहीं करना चाहते। हमको लगता है कि सपने जो होते हैं ना, उस पे सपने तो देखो, पर सपने कभी पूरे नहीं होते, ये नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। पर मुझे लगता है कि उन सपनों पे बात करना बहुत जरूरी है। उन सपनों को हकीकत तक कैसे पहुंचाएंगे, उसकी जो प्रथम कड़ी है वो हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग हैं, और उसके बाद में उस परिवार को सपोर्ट करने के लिए लार्जर सोसाइटी है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करें ताकि जो ये राइट्स हमको, हमारे जो आर्टिकल्स में अभी मैम भी बात कर रही थी, जो कैंपेन्स है, ये सब एक सपोर्ट पे, पर जो करना है वो सबसे पहले जो करेगा वो परिवार और समाज के लोगों को स्टेप लेना पड़ेगा और हमको बात करना पड़ेगा। आज भी लड़कियों के साथ में वो होम साइंस लेगी, मैथ्स लेगी, वो उसकी चॉइस पे देना चाहिए कि लड़कियां हैं तो होम साइंस पढ़ेंगी, मैथ्स उनके बस की बात नहीं है। नैरेटिव्स आज भी हमारे समाज में है। या लड़कियों को इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि वो बेहतर कल, वो एक परिवार को, एक पढ़ी लिखी लड़की एक परिवार, अगले पीढ़ी को शिक्षित करेगी। ये नैरेटिव्स है, इन नैरेटिव्स को हमको ब्रेक करना। मुझे अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाना है ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले पाए। आगे परिवार को शिक्षित करना, सारी जिम्मेदारियां ना हम लड़कियों के कंधों पे डालते हैं। समाज को बेहतर बनाना है, लड़कियों को बेहतर कर दो। एक शिक्षित समाज बनाना है, लड़कियों को बहुत शिक्षित कर दो, क्योंकि वो आगे परिवार को शिक्षित करेंगे। मुझे लगता है ना कि इन सब चीजों से एज ए इंडिविजुअल उसकी लीडरशिप पे बात करने की ज्यादा जरूरत है। एक लड़की को बेहतर हेल्थ सर्विसेज दो, वो कुपोषित ना हो, ताकि वो कुपोषित बच्चा पैदा ना करे। मुझे लगता है इन सब चीजों को देखने की जरूरत है जेंडर लेंस से। एक लड़की एज ए इंडिविजुअल, एज ए एडोलेसेंट, एज ए इंडिविजुअल, उसकी लीडरशिप एंड उसकी आइडेंटिटीज पे हमको बात करनी पड़ेगी। एक आगे भविष्य, जो जनरेशन आ रही है वो शिक्षित हो, वो बेहतर हो पाए, वो तब हो पाएगा जब मेरी बेटी, मेरा बेटा एक बेहतर लीडर के रूप में स्टैब्लिश होगा। वो अपने अपने समाज में, तो वो चीजों को बेहतर तरीके से लेके जा पाएगा। वो दोनों की जिम्मेदारियां हैं। दिस इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर विमेन कि मुझे अपने बच्चे को शिक्षित करना है इसलिए मुझे शिक्षित होना है। मुझे खुद खुद के लिए भी बात करने की जरूरत है एज अ इंडिविजुअल। जो बोझ हम देते जा रहे हैं कि परिवार को संभालना, इसलिए आपको, मुझे लगता है ये परिवार जो है ना, ये जो काम परिवार है, ये हम ये घरों में हम सबको बात करने की जरूरत है कि सबकी जिम्मेदारी है। ये घर सबका है, ये घरों में सबकी जिम्मेदारी है, और हमको वो स्पेसेस अपने एडोलेसेंट्स के लिए क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे हमें इस तरह का कम्युनिकेशन कर पाए। और अगर जो रिस्क है वो रिस्क लेने के लिए अपनी लड़कियों को तैयार करना पड़ेगा हमें, और ये भी बोलना पड़ेगा फेल होंगे, कोई नहीं, जिंदगी में फेल नहीं होते। वो जब स्टेप लेंगी, गलत होगा सही होगा, उससे लर्निंग्स क्या हो रही है उस पर बात करने की उनके साथ, एडोलेसेंट्स के साथ में ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन इज अ बेहतरीन टूल है जिसपे बात करने के लिए, पर लाइफ स्किल्स के इश्यूज के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम नेगोशिएशंस पे बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशंस पे बात नहीं करेंगे, फीलिंग्स पे बात नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हम एक बॉक्स में कैद करते जा रहे हैं चीजों को। तो लाइफ स्किल्स के ऊपर बात करना एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के साथ में इक्वली उतना इम्पोर्टेंट है जहां पे हम एकेडमिक्स की बात करें। एकेडमिक्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की तरफ जब हम बात कर रहे हैं वो भी उतना इम्पोर्टेंट है, पर हमारे परिवारों में हमारे नॉर्म्स के ऊपर सवाल उठाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। कि जो ये नॉर्म सेट करता है कि घरों का काम तो घर का तो काम करना ही है, आपको आप बाहर निकलोगे लेकिन घर का काम तो बेटा इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ये जिस दिन हम ये कहेंगे इतना भी मैनेज नहीं करना है, एक्चुअली हम लोग वहां पे अपने एडोलेसेंट्स को, अपने गर्ल्स को एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएंगे। मैनेज ही क्यों करना है, वो सबको करना है। दिस इज नॉट ओनली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओनली फॉर गर्ल्स इन जो हाउस में घर में रह रही है। घर को मैनेज करना, घर को देखना, घर को संभालना, ये हम सबकी जिम्मेदारी जब तक नहीं बनेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज घर में नहीं होंगी, जो पावर का जो जो एक नॉर्म होता है ना कि पावर जो है वो पुरुषों के हाथ में और लड़कों के हाथ में ही है, ये नॉर्म है। इस नॉर्म को जब तक हम इक्वली शेयर्ड नहीं करेंगे, इसको
बदलेंगे नहीं, कि जो पावर है वो सबके हाथ में इक्वली आना आएगा घरों में। डिसीजन मेकिंग्स में जब तक हम एडोलेसेंट्स गर्ल्स को अपने इनको नहीं लेके आएंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। आज भी मेरे घर में आज भी ये है कि मैं अपनी माँ को हमेशा क्वेश्चन करती हूँ। वो हमेशा आती है और मेरे पापा से पूछती है कि आज क्या खाओगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये एक छोटा डिसीजन है कि शाम को खाना क्या बनेगा, वो भी आज भी हमारे घरों में एक एक तरफ देख लिया जाता है कि पूछ लेते भाई से, या पूछ लेते पापा से, पूछ लेते पति से, वो क्या खाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो डेली लाइफ में हम करते हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है, इन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है कि वो खाना किसकी पसंद का बन रहा है, वो चॉइस किसकी है। कहते नहीं नहीं हमारे यहाँ तो सब बेहतर है, मेरे को भी लगता है मेरे घर में भी सब बेहतर है, पर हम सब प्रैक्टिस करते हैं जेंडर्स की। कई बार हम बहुत बखूबी प्रैक्टिस करते हैं और कई बार हम नहीं कर पाते, बिल्कुल फेल हो जाते हैं, हम भी उसी ट्रेडिशनल उसमें चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को जब तक हम एज ए इंडिविजुअल अनएक्सेप्टेबल नहीं बनाएंगे, इन जेंडर नॉर्म्स को जब तक अनएक्सेप्टेबल अपने घरों में नहीं बनाएंगे, हम ये लड़ाई लड़ने में थोड़ा सा ना अपने आप को पीछे करते रहेंगे। हम लड़ तो रहे हैं, सभी बहुत बखूबी, अब सभी ने बात रखी, हम बहुत बखूबी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सबका ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां स्कूलों में रहें, वो अपनी पढ़ाइयों को कंप्लीट करें। पर वो कंप्लीट करने के साथ में ये सारी चीजों को भी एक पे बात करना जरूरी है। वो ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो लड़की स्कूल जाने से पहले उसको ये ना हो कि उसके 4 रोटी सेक के निकलना है, क्योंकि उसके घर में छोटे भाई हैं, क्योंकि घर में पिता बीमार है, दादी बीमार है, उसको सुबह की 4 रोटी बना के स्कूल जाना है। तो जब तक वो उसको हम इन सारी चीजों से उसको नहीं निकालेंगे, तब तक हम शायद चीजों को जिस तरह से हम लड़ना चाह रहे हैं उस तरह से शायद हम नहीं देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि नॉर्म शिफ्ट पे बात करना, लाइफ स्किल्स के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मुझे मैंने बोला भी था कि मैं कुछ एडोलेसेंट से बात करूंगी, और डेफिनेटली क्योंकि हम सुनना भी चाह रहे थे, तो मुझे हमेशा लगता है कि सपनों पे बात करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई अपना सपना बता पाए और ये बता पाए कि वो सपने को पूरा करने के लिए वो क्या कर रही हैं, और हम वो भी सुने, तो बेहतर होगा। तो मुझे मुझे बस यही कहना था, और आई एम वेरी होपफुल कि हम लाइफ स्किल्स को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने काम में, और लीडरशिप पे बात करेंगे। नॉर्म शिफ्ट को लेके खास तौर पे हम अम, उसको जो 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 पैट्रियार्कल नॉर्म्स है, एटलीस्ट ये कहें कि ये अनएक्सेप्टेबल है, और हम कोशिश करें उनको उसको अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए। जब तक एकजुट नहीं होंगे, नॉर्म एक दिन में नहीं बनते, नॉर्म बनने में पूरी एक जनरेशन लगती है, तो शिफ्ट करने में भी एक पूरी जनरेशन को लगना है, हम सबको तो उसके लिए हम सबको उसे अनएक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा और उस पर यकीन करना पड़ेगा कि यस, इसको बदलना है। थैंक यू कृति दी, थैंक यू सो मच। आपने एकदम, मैंने बहुत सुना है इस चीज पे भी, और मेरा पहला पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है कि कोई भी काम घर का और बाहर का नहीं होता। देयर इज नो वर्क लाइक दिस इज अ होमवर्क और दिस इज वर्क फॉर आउटसाइड। सो until and unless our family और सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, हम एजुकेशन एज अ वेपन तो यूज कर सकते हैं, बट बिफोर दैट we need to focus on equality, and for that we need our society and family to support us. Thank you Kriti di, thank you for giving us, and yeah, I know girls, लड़कियों को बहुत सारी बातें करनी होंगी आप लोगों से, but we have that 10 minutes for them as well. So let's move to the next one. Next speaker, we have Professor Madhurima Pradhan, who is a founder, director and technical expert, Happy Thinking Laboratory. She has 35 years experience of teaching, research, and counseling. She has presented and published more than 60 research papers in national and international conferences and books. She has
She is boss members of many universities and had been a part of developing syllabus at UG, PG and PhD programs and under NEP. She has delivered more than 100 lectures at various platforms, completed three major projects sponsored by UGC, ICSSR and NCRT. So, please welcome Professor Madhurima Pradhan. Everyone, please welcome. Thank you. Okay. Very good evening to all. And I hope I'm audible. I'm audible and visible. Yes, you're audible, ma'am, and Okay. visible. Okay. So first I would like to thank SES, Mr. Sandeep Srivastav ji and Sitanshu ji for giving me an opportunity to interact with all of you on this seminar on Invest in Girls' Rights, Leadership and Well-being. And I had been listening to all the speakers, and most of the points have been covered. But I would like to see this topic with my own perspective. And the narratives which were told by Swecha Prasad ji, I just can connect with this. And the earlier speaker, Kriti, also talked about it, the narratives, because our life is a story. And I would like to share my story in brief. Because when I was a young girl at adolescent stage, I used to see my mother repenting or somewhat depressed. She was that she could not study much. In those days, it was 1950s. And my mother got married at the age of 17 years, you know. And after marriage, she could study up to graduation, but she had a desire that she could study more. So I just lived up that desire of my mother, and whatever I'm today, I'm living up the dream of my mother. And the way she nurtured us, and the way I got married, and after marriage, my husband, my family, apart from my family responsibilities, I could complete my studies. And after marriage, I could do my PhD, my B.Ed, and I selected in a higher education commission, then university, and still I'm pursuing my studies. So this is my story, and I would like to say that the small things which Krati very beautifully mentioned, that how we communicate with girls since beginning, since childhood, how we nurture them, what narrative, because these are the communication which hover the mind, the self-talk which the girls make with her own self is very crucial for her own well-being and own development. So much has been said. I will not repeat those things. And it means that if we invest on girls' education, if we provide them sufficient opportunities, sufficient diet, nutrition, and time to study, time to pursue their own dreams, then we not only invest for that particular child, girl child, but we invest for the whole family, whole society, and the nation. And regarding my story, I've just shared, and I am at the university. I was a director of counseling and guidance cell. I founder director of Happy Thinking Laboratory and the chairperson of internal complaint committee. So while holding these charges, I just realized that girls have their own issues. And since we had the girls from higher education, UG, PG girls, so they had specific issues. And we used to provide them a platform through which they can come to us, because there are many problems, many issues which girls don't want to discuss in their families, even their friends or the teachers. So we just provide them a platform through which they can come to us, share their problems and issue, and we can provide them certain guidelines or help them out to come over these stresses and anxiety which they are facing. So with this objective, when NEP 2020 was introduced in our university, so as you all know, and much has been said on NEP,
that the NEP focuses that we should not only develop the academic intelligence of our students, but we have to work on their social emotional learning, the skills, the emotional intelligence, the communication skills, and more importantly, the life skills. So with this objective, these cells were established, counseling and guidance cell and happy thinking laboratory, and of course internal complaint committee, in which the girls came with the issues of relationship abuse, toxic relationship, or the gender violence or gender discrimination which they are facing in the campus. So when we talk about happiness and well-being, because I have been given the topic on happiness and well-being. So since I'm a professor of psychology, I would like to share something that recently there is a paradigm shift in securing the mental health of people. And this is a paradigm shift from clinical psychology to positive psychology. In clinical psychology, we just seek to get the person get over from stress, anxiety, depression, loneliness, frustration, negative qualities. So if we get the person recovered from these symptoms, we say that the person is mentally healthy. But recently, the paradigm has been shifted, and we just talk about the positive psychology, which assumes which has belief on the positive strengths of the person. And instead of studying what type of factors make a person stressed out or anxiety or depression, we just study what type of people are more happy. What makes a people more happy and satisfied in their life. So in this laboratory, we just motivate our student to understand the true meaning of happiness, how the happy mind works, how we should take full charge of our own thoughts, because our thoughts are our seeds. Whatever seed we sow, the tree will come out. So this laboratory works on the value of our own thoughts. So if we want our girls to come out of their issues or the narratives which they are living up, because despite being the era of women empowerment, there are many myths prevailing in the society still. अक्सर ये होता है, मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला है, और बेटी को बेटा बनाने में पेरेंट्स लगे हैं, और लड़कियां भी अपनी जो एक फेमिनिटी है, एक जो उनकी सॉफ्टनेस है, जो उनको कुदरत ने एक खूबसूरती दी है, एक इमोशंस दिए हैं, उसको छोड़ के वो दे आर जस्ट चेजिंग टू बिकम जस्ट लाइक बॉय. तो जो बॉयज करेंगे, अगर वो करेंगी, तो दे फील women empowered. So I would, from this platform, I would like to emphasize that girls should understand the true meaning of women empowerment. Women empowerment means that you are capable of pursuing your dreams, your education. You have equal rights, and you can you have a right to say no to those relationships which are toxic. They can secure their own physical boundaries and psychological boundaries, and contribute not only to their family but also their society and community. So these are the power of the women, and they should not compare themselves to males, because they are already much ahead of them. So they should understand that they are the creator of their own destiny. So what type of thoughts they have to create, and all the stakeholders, be the parents, be the teachers, and be the members of any NGO who are working for adolescents' rights or adolescents' mental health. I would like to say that there is data that girls and women are more sufferer of mental health issues. So they have to think on their thought process. And in the positive psychology paradigm, we just find that mental health is not an either or situation. It is just a continuum. All of us, हम सभी उस दौर से गुजरते हैं जब कभी हमारा मेंटल हेल्थ या हमारा हैप्पीनेस लेवल बहुत हाई होता है, और कभी हम बहुत लो होते हैं. तो वो क्या छोटी छोटी चीजें करें लाइफ में, वो कौन से लाइफ स्किल्स हम सीखें जिससे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी वेलबींग और अपनी हैप्पीनेस को
सिक्योर कर सके। सो यकीन जानिए कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है अपनी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को सिक्योर करने के लिए। लाइफ में बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुश बना सकती हैं। जैसे हम विमेन और गर्ल्स को दूसरों की केयर करने के साथ साथ खुद की भी केयर करनी है। दे शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर द सेंटर ऑफ देयर फैमिली, देयर सोसाइटी। तो सेल्फ केयर करनी है जिससे कि उनकी जो बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स है वो रिलीज हो, डोपामाइन रिलीज हो। they have a capacity to love, they have to love others, they can give compliment to others, they can feel gratitude toward others, they can enjoy the beauty of nature, meditate, keep focus on their breath। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो भी वो कर सकती हैं छोटी छोटी चीजें, और अपने से जुड़ना, अपने सेल्फ को समझना। बिकॉज उनकी आइडेंटिटी ज्यादातर ये होता है कि हम गर्ल्स जो हैं फैमिली में होते हैं तो अपने मदर और फादर्स के ड्रीम फुलफिल करते हैं, और शादी के बाद अपने घर परिवार के और अपने बच्चों के, लेकिन अपने बारे में भूल जाते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी क्या है? one has to connect with one's own identity if we want to make the girls and women happy and satisfied in their own lives. So much has been said. I would not repeat those things, and I would like to end my speech with 4 lines. बेटियों का क्या कहिए वेद की ऋचाएं हैं, बेटियों का क्या कहिए वेद की ऋचाएं हैं, प्यारी लगती जैसे पूर्वा हवाएं हैं, मीठी गुड़धानी सी निष्ठावान करुणामयी, देश की तरक्की की लहराती ध्वजाएं हैं, देश की तरक्की की लहराती ध्वजाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Madhurma ma'am. Thank you so much. And yes, this is very true. मैंने भी बहुत जगह सुना है ये चीज कि मेरे पास लड़की कहाँ, वो तो लड़के जैसी है, और मेरे पास बेटी कहाँ, वो तो बेटे जैसी है, वो बिल्कुल बेटे जैसी ही है, मेरा ख्याल रखती है, सैलरी ले आती है, मुझे देती है, मेरे बेटे जैसी ही है। लेकिन कभी बेटियों से जब वो काम करती हैं तो उनसे ये नहीं पूछा जाता बेटा तुम अपने लिए क्या कर रही हो, कभी नहीं पूछा जाता। So thank you for telling us, and thank you for talking on happiness and well-being, how we can control our emotions and manage our emotions. Thank you so much, Madhurma ma'am. Thank you so much. Thank you. So let's move on to the next. As I said earlier, that our girls will give us their insight. So first of all, I want to welcome our club girl named Jara. Let's listen to her issues which she discuss with every girl and in their community. So Jara, over to you. Thank you, ma'am. So first of all, good evening, honorable guests, respected sir or ma'am. My name is Zara. I'm from Lucknow and I'm here to share my local community issue. There are a lot of issues, but I selected one topic that affects the girls' well-being, that is bodily autonomy and sexual and reproductive health and rights. Bodily autonomy and sexual and reproductive health and rights, that is SRHR, a fundamental concept that are closely related and play a critical role in personal well-being, gender equality, and human rights. So we, as a peer educator and my other friend groups, analyze that sometimes bodily autonomy and sexual and reproductive health and rights (SRHR) creates issues in local societies due to a range of factors, including cultural norms, traditional beliefs, a lack of awareness, and policies. So we, peer educator groups and other club members collect together for a conversation circle. In this circle, we discuss on the fact that our communities have deeply ingrained belief that restrict on or oppose certain aspects of sexual and reproductive health and right, such as contraception, abortion, sex education. We also find that gender norms and discrimination limit women's and girls' access to sexual and reproductive health and right information and services. This also includes unequal access to healthcare, harmful practices like child marriage, and restriction on female mobility. For closing the gap, we request to the supervision of
PSC, and doctors that they raise awareness at the community level to get a solution. And as a result, they support awareness, resolve the queries of many parents and club members, and provide information like government health departments and organizations offering internship related to sexual and reproductive health and right. The National Health Mission H&M, but still we are facing challenges and have some questions. So me and my friends are here to get some more reflection on a question during the webinar, which will close the gaps. Thank you so much. Thank you, Zara. So let me conclude her saying, actually, we have events called local summit and conversation circle. In conversation circle, we talk or our girl discuss about the issues in their community, and they choose one topic which is like not discussed in their community, and then they take it to the resource and the resource person. So Zara and her club members and her friends choose the topic bodily autonomy and sexual and reproductive health and rights, and they took it to the PHC, that is Primary Health Center, where their questions were asked from the doctors and the nurses and their community leaders, and they have answered. But still, she and her club members and her friends have much questions on it, which they will ask later on with you all. Thank you, Zara. Let's move on to the next issue and the next. Let's move on to the next issue and the next girl, that is Nazneen. Nazneen, over to you. Good evening, honorable guests, respected sir or madam, and my dear friend. My name is Nazneen and I'm here with a community issue, which is technology and innovation for gender equality. Technology and innovation plays a crucial role in advancing gender equality in various aspects of society, including education, employment, healthcare, and social empowerment. Same here, as my friend Zara says previously, we as a club member and peer educator group identifying issues which create barriers to technology and innovation for gender equality in our local community. In this circle, we discussed how technology allows girls to explore entrepreneurship and employment opportunities. It also provides a platform for blogging and vlogging and social media, enabling girls to express themselves creatively, and we understand technology is essential in the development of healthcare solutions such as telemedicine that research women in rural area and provide reproductive health information and service. But we analyze that in our local community, women and girls have less access than boys and men, creating a digital gender divide. This affects women and girls' ability to engage in increasingly technology-focused world. So, to close the gap, we met and invite some stakeholders and resource person and discuss our community issue with them at our local summit. Through this summit, we get solution in the form of awareness. The Indian government has introduced several initiatives to promote STEM. One is the National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, and the National Skill Development Corporation, NSDC. But still, we have some question. So we and my friend are here to get some more reflection on our question during the webinar, which will close the gaps. Thank you. Thank you, Nazneen. To take on the issues of technology and innovation for the gender equality. So this is this is another issue of our other club girls who have chooses technology and innovation for gender equality, because as we see and as our guests also have talked about it, that gender equality before the technology access to technology before COVID is different, and now it is different. So our girls want more answers, and we will
take towards there and answer it later. Let's move on to the next issue, which our club girl Tashu will share with you. Tashu Verma, over to you. Thank you, Nazneen. You're most welcome. Should check whether Tasu is there or not. I think Tashu is having a bit network issue. Okay. So we can move to the next issue, or we are concluding the session. Yeah. We are having some question answer session, Tanishka, so you please continue with that. Okay, so just let me tell about their issue, Tashu's issue. Tashu's and Club Girls issue is girl leadership and well-being. They want to discuss about why there is less leadership role for the girls and more for the guys. So we will discuss it later if Tashu is here, or we will move on to the question and answer round. So we have a few questions which girls will ask, and I would like to invite girl Shifa to ask your question from the speakers and the guest. Hello. Hello, Yeah, ma'am. Am I audible? Yeah, you're audible. Okay. So, ma'am, about the leadership, my question is, what is the role of government, policy makers, and community supporters towards girls' leadership? Hello. So let me repeat the question. How can government leaders, policymakers, and communities support girls' leadership? This is a question from Al Shifa, and I want speakers and guests please answer it. Tanisha, please repeat the question. Yeah, Kritik, question is how can government leaders, policymakers, and community support girls' leadership? तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिसी मेकर एंड गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लीडर, क्योंकि जो मैं बात बोल रही थी ना कि एक चीज को बिल्ड करने के लिए इन सारी यूनिट्स का एक साथ होना बहुत जरूरी है। तो अगर गर्ल लीडरशिप की हम बात करें तो हमारी पॉलिसी गर्ल्स लीडर्स करने के लिए होनी चाहिए, जो हमारी आपकी बातों को, आपकी लीडरशिप को और आपकी नीड के आधार पर वो इस तरह की पॉलिसीज हो, और जो लीडर्स है वो कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे जमीन पे, ये उनकी, और कम्युनिटी उसको कैसे लेगी। तो हर किसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ये रोल तभी खूबी हो पाएगा जब आपके इंटेंशंस में हम उस चीज मन से करना चाहेंगे। कभी कभी परेशानी क्या होती है कि हमारा यकीन नहीं होता और हम वो काम करते हैं, तो उस काम में यकीन नहीं होता ना, तो हम थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। तो जो रोल है इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें एडोलेसेंट एम्पावरमेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉलिसीज चाहिए होंगी, कुछ प्रोविजंस चाहिए होंगे, कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए होंगे पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस सिस्टम्स में, तो जिसकी लीडरशिप को आगे लेके जाता है। जैसे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ सिस्टम्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल है और सबका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो कम्युनिटी है, जब तक डिमांड रेज नहीं करेंगे हम लोग मिल के अपने इश्यूज को लेते तब तक पॉलिसीज एंड पॉलिसी मेकर उस चीज क्या, तो डिमांड और सप्लाई दोनों साइड पे मुझे लगता है कि दोनों का ना काम करना, दोनों एक
लेवल तक अलाइंड होना बहुत जरूरी है। मैं इसको इस तरह से Can we move to next question, or is there any question from the girls' side? Yeah, we have. Thank you, Kratidi, for your answer. And I think we have lost some communication here and network issues there. So let's move on to the next question. And the question is from Sanya Ansari. Sanya Ansari, over to you. Hello everyone, am I audible? Yes, Sanya, you're audible. So my question is, what services, supports or infrastructure are missing in our community that would help to improve our well-being? Hello? Yeah, so the Sanya's question is that what service, supports, or infrastructure are missing in the community which will help to improve their well-being? So anyone from the speaker and the guest to answer, please. I think we are running out of time, and everybody's, I think, a bit hurry. So if anyone can reply, or we can also reply. Hello. Yeah, Dr. Pushpanjali, Can sure. you please repeat your question, Sania? Yes, ma'am, I can. My question is, what services, supports, or infrastructure are missing in our community that would help to improve our well-being? To improve your Well-being. actually, that last one is not actually, some echo is coming, which will which was yeah, Let me interrupt. The last is improve our well-being. well-being actually. Actually, as per me, I think this actually lot many policies and everything is coming here, but equality, something infra in a digital infrastructure. Actually, I think there's a lack of digital infrastructure that is not actually reaching to every place. So as per me, I think if the uh, they will use this digital infrastructure to reform the country, I think it will be very useful and improve their well-being actually. Education system and digital infrastructure. Thank you, Pushpanjali ma'am, for the answer. Thank you so much. And so let's move on to the next question. We have Azra from the club. Azra, please ask your question, please. Hello everyone, can you hear me? Yes, Azra, you're audible. Okay. So my question is, how would free and untaxed access to period products change the circumstance for girls? So let me repeat the question. The question is, how would free untaxed access to period products change the circumstances for the girls? That's the girls' question. Please repeat that, Tanishka, the question. Yeah. So the question is, how would a free, untaxed access to period products change the circumstances for the girls? Like if we get a untaxed pad or an untaxed sanitary napkins, untaxed menstrual cup,
So how that can change the circumstances of a girl? Anyone from the game? I think that is the basic need. It is tax or not tax. We are getting foods that is also taxed. So it is not all about we are taxing it, not taxing. It is basic need, and everybody should have that requirement regarding period. So definitely, if it is the price is low, the accessibility will be high. But there are several instances or initiative where community itself themselves are creating pads and all those things. So I think that's basic need. I don't think it's tax or untaxed. हाँ, क्योंकि हम तो खाना खाते हैं, खाने पे टैक्स लगता है, लेकिन खाना तो खाते हैं तब भी। तो बेसिक नीड है, वो डिपेंड करता है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी कितनी है। तो वो बहुत जरूरी है, आई थिंक, उसको समझना कि ये हमारी बेसिक नीड है। या Thank you, sir. Thank you for the answer. And we have one more question. Okay. We have one more question from Arshi. Arshi, over to you, please. Good evening to all of you. Am I audible? Yes, Arshi, you're audible. Good evening to all of you. Here I am Arshi, and my question is, why is it important for girls to have access to technology, and what impact it have on them for their future? I repeat my question. Why is it important for girls to have access to technology, and what impact it have on them for their future? So can I answer? श्योर प्रति जी, श्योर। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे अ, एक तो ये है कि हम अपने आप को अपडेटेड रखना, हम नई चीजों को सीखना, वो हम वो हमारी स्किल्स को इनहेंस करता है, हमको और कनेक्ट कराता है लार्जर स्पेसेस से। तो मुझे लगता है कि वो एक एडोलेसेंट्स के लिए, गर्ल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो जानना, उस पे काम करना, उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब हम बैठ के वेबिनार भी कर रहे हैं, शायद हमने नहीं सोचा था कभी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनेगा और हम इस तरह के वेबिनार्स कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत आने वाले, अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम जिस तरह की चीजों में बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में इसका हम और बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अभी भी हम शायद पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम बहुत कुछ इस पे सीखना भी हमें बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और खुद के लिए भी, ताकि हम जो अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें हम कदम मिला पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और जो इसके पहले का एक सवाल था, मुझे लगता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, वो मैम ने बिल्कुल डेफिनेटली बात बिल्कुल सही बोली है, पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मिसिंग्स है। हमको हमारे स्कूल्स मिसिंग्स है, स्कूल्स के अंदर से टॉयलेट्स मिसिंग्स है, स्कूल तक के रोड्स मिसिंग्स है, स्कूल में टीचर्स जो हमें बेहतर सब्जेक्ट टीचर्स मिसिंग्स हैं। सो मुझे लगता है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और बहुत महत्वपूर्ण है इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बात करना। और इनको अगर हम अपने एरियाज में आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको लेके जो अकाउंटेबल लोग हैं ना, उनको अकाउंटेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उन लोगों को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, हेलो मिस्टर, हेलो मैडम, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपके आपके पैसे से ये स्कूल का छत डलना था, वो नहीं पड़ा है। जब तक हम उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे बात नहीं करेंगे, तब तक चीजें होंगी नहीं, क्योंकि हमने स्कूल तक तो बना दिया, पर स्कूल तक जाने के लिए क्या रास्ते हैं
हमारे पास, वो कनेक्ट करते नहीं करते। या तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे भी ये सब मिसिंग्स हैं और इस सब पे हमें बहुत पुरजोर तरीके से बात करने की जरूरत है। या थैंक यू कृति मैम, कृति जी, आपने बहुत थैंक यू कृति जी, या बोलिए। या मैम प्लीज। या एक्चुअली मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ सर। जैसे ये टेक्नोलॉजी की बात आ रही है फॉर द गर्ल्स, तो वेरी बेसिक नीड में टेक्नोलॉजी में मैं ये बोलूंगी, जैसे फॉर द जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं फॉर द वुमेन करियर, एक्चुअली वी नीड टेक्नोलॉजी। बट वेरी 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 सिंपल एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू। जैसे आप ट्रेवल करें फॉर द सेफ्टी पर्पस, what technology we are using at our tip. So for the safety purpose, like we are moving here and there, if we know that how to use the Google app, how we can secure our position, we can share our position where we are moving. So this is a very basic need for our safety. Everybody will, means they can follow us where we are moving, where we are going. So this is a kind of a technology जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। घर से निकलते हैं, ओला में बैठते हैं या कैब में कभी भी बैठते हैं, फॉर आवर सेफ्टी दिस इज अ वेरी बेसिक। ये टेक्नोलॉजी में आनी चाहिए। इसके बाद तो हम कोई भी चीज विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट यूज एनीथिंग एक्चुअली। Means from morning we are waking up, we are touching the mobile, that is technology. We are moving, now we are cooking, we are using the microwave, whatever we are using, now we are in a technological world actually. So for our safety, for our education purpose, we are sitting here and talking like that, this is also technology. In the classroom there is technology. our जो भी हम लोग ज्ञान लेते हैं, गूगल ज्ञान लेते हैं, जो भी, that is because of technology. So technology is actually by all the way, for the safety, for all the purpose, we need the technology. And this is, of course, this is, if we are using a better way, this is improving our actually lifestyle. That I wanted to say actually. Thank you. निष्का। So here they have finished their questions. And yes, thank you speakers and the participant. Speakers, you have given us so much knowledge, and especially for the our girls, so much motivations. And thank you for answering their questions. Thank you for listening them. And yes, what a webinar. Our time was 6 to 7:30, but we are reaching at 8. And I know someone is getting, some might be getting late, some might be getting, but yeah, it was exciting. All of you, thank you so much. Thank you everyone for active participation and insightful contribution. Thank you so much. Thank you for SES team. Thank you, thank you. Thank you so much, SES team. So everyone can leave, and thank you. Thank you, Tanishka. Thank you, ma'am.